हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद रूपक। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और बोरोइंग। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 5 सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव पार्लियामेंट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स? सही आंसर है 24th अमेंडमेंट। Second question, the mini constitution that added fundamental duties and inserted socialist and secular into the preamble in which amendment? सही आंसर है 42nd amendment. Third question, which amendment restored the term of the Lok Sabha and state assemblies from 6 years back to 5 years and removed right to property from fundamental right? सही आंसर है 44th अमेंडमेंट। Number 4th question, the anti-defection law was introduced by inserting the 10th schedule to which amendment? सही आंसर है 52nd amendment. Which amendment reduced the voting age in India from 21 years to 18 years? सही आंसर है 61st amendment. Next question, Panchayati Raj institution were given constitutional status to the insertion of Part 9 by which amendment? सही आंसर है 73rd amendment. 7th question, which amendment gave constitutional status to urban local bodies by adding Part 9 clause A? सही आंसर है 74th amendment. Question number 8, the right to education under Article 21A was made a fundamental right for children aged 6 to 14 years by which amendment? सही आंसर है 86th amendment. Question number 9, which amendment limited the total size of the Council of Ministers to 15% of the total member of the House? सही आंसर है 91st amendment. Question number 10, the good and service tax was introduced in India to which constitutional amendment? सही आंसर है 101st amendment. Question number 11, which amendment provided 10% reservation for economically weaker section in education and public employment? सही आंसर है 103rd amendment. Question number 12, which amendment extended reservation of seat for SC and ST in the Lok Sabha and State Assembly by 10 more years and removed the reservation of the Anglo-Indian community? सही आंसर है 104th amendment. Question number 13, Sikkim became the 22nd state of India through which constitutional amendment? सही आंसर है 36th amendment. Question number 14, which amendment gave Delhi the special status of the National Capital Territory with the own legislative assembly? सही आंसर है 69th amendment. Question number 15, which was the very first amendment to the Indian Constitution made in 1951 and what did it primarily add? The correct answer is first amendment and it added 9th schedule. अभी हम लोग देखेंगे borrowing feature of the constitution. The Indian constitution borrowed the concept of fundamental right from the constitution of which country? किस कंट्री से हम लोग ने फंडामेंटल राइट बोरो किया है? सही आंसर है यूएसए. The directive principle of state policy were borrowed from the constitution of which country? सही आंसर है आयरलैंड. The Indian parliamentary form of government with a nominal head of state and a real executive is borrowed from which country?
सही आंसर है यूके। हम लोग ने यूके से रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम भी बोरो किया है। क्वेश्चन नंबर 19, the power of the judicial review allowing court to examine the constitutionality of law was borrowed from which country? सही आंसर है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 20, the concept of concurrent list containing subject on which both center and state can legislate was borrowed from which country? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। Question number 21, the Indian fundamental duties were added to on the recommendation of the Swaran Singh committee inspired by the constitution of which country? सही आंसर है यूएसएसआर रशिया। 22nd question, the procedure for amendment of the constitution under article 22 368 was borrowed from which country? सही आंसर है साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23, द स्कीम ऑफ ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेनली बोरो फ्रॉम विच कंट्री? सही आंसर है कनाडा। द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 352 to 360 वेर बोरो फ्रॉम विच कंट्री? सही आंसर है जर्मनी। Question number 25, the idea of a republic with the ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble was borrowed from the constitution of which country? सही आंसर है फ्रांस। The scheme of indirect election to the Rajya Sabha and nomination of member with special knowledge was borrowed from which country? सही आंसर है आयरलैंड। Which source of is credited as the single largest source of the Indian Constitution contributing the federal scheme Office of Governor and Public Service Commission? The correct answer is Government of India Act 1935। हम लोग अभी क्विक रेफरेंस के लिए देख लेते हैं कौन सा कंट्री से हम लोग ने कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। हम लोग ने यूके से बोरो किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूएसए से हम लोग बोरो किया है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आयरलैंड से हम लोग ने बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नॉमिनेशन टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कनाडा से हम लोग ने बोरो किया है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर विद यूनियन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने बोरो किया है कॉन्करेंट लीज, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी से हम लोग ने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से हम लोग ने लिया है प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रशिया से हम लोग ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फ्रांस से लिया है हम लोग ने रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। एंड द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग ने लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। आज के लिए हम लोग के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर एसएससी, ADRE, NTPC प्रिपरेशन। थैंक यू।